Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students. This is class of physics for first year. Students, in the previous lecture we were discussing about the applications of dimensional analysis. हम लोगों ने दो applications of dimensional analysis discuss की थी. The first one was related to the correctness of the physical equation. कोई भी physical equation उसकी correctness आप लोग कैसे check कर सकते हो by the help of dimensional analysis. और उसके लिए आप लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टडी किया था. इन अ सेकेंड एग्जाम्पल वी सी हाउ वी कैन डिराइव द पॉसिबल फार्मूला फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. और प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा था कि कोई भी हमारे पास एक बॉडी थी, एक सॉलिड स्फीयर था जो एक फ्लूइड में मूव कर रहा था. उस फ्लूइड की विस्कोसिटी ईटा थी और वो जो स्फीयर था उसका रेडियस आर था, वो वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था. तो उसके लिए हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करते हुए पॉसिबल फार्मूला डिराइव किया था. एंड दैट फार्मूला वाज एफ डी इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी. In today's lecture students, we are going to derive the possible formula for the time period of the simple pendulum, and this is your assignment number 1.7 from book. In the assignment 1.7 students, you are just given the information that कि एक एक्सपेरिमेंटर है, उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है और उसने ये देखा है, उसकी ऑब्जर्वेशंस ये थी कि जो टाइम पीरियड है वो सिंपल पेंडुलम का वो तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है. These are his observations. The first is mass of bob, जो पेंडुलम के साथ छोटा सा मैस नीचे लगा होता है स्ट्रिंग के साथ, उस बॉब के मैस के ऊपर डिपेंड कर रहा है. सेकेंडली लेंथ ऑफ पेंडुलम, और लेंथ ऑफ पेंडुलम स्टूडेंट्स ये पेंडुलम आप लोग डिटेल में सिंपल हार्मोनिक मोशंस डिस्कस करोगे अपनी फर्स्ट ईयर की बुक में, आई थिंक इन द चैप्टर नंबर 7 और 8. तो उसमें आप लोग देखोगे ये जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है दिस इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ बॉब. ओके. और थर्डली जो चीज़ है जिसके ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है दैट इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g. Okay, now what you are asked to derive the possible formula for the time period of simple pendulum. तो आप लोगों ने सिंपल पेंडुलम के लिए उसके टाइम पीरियड के लिए जो है वो फार्मूला डिराइव करना है. सो टाइम पीरियड स्टूडेंट्स क्या होता है, सिंपली आप लोगों ने अपनी मैट्रिक की क्लास में पढ़ के आए हो, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो किसी पेंडुलम को टाइम चाहिए होता है दैट इज़ कॉल्ड एज द टाइम पीरियड. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे फिगर स्केच करूँ पेंडुलम की, सपोज दैट दिस इज सम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड आपके पास कोई भी एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, आप लोगों ने उसकी मदद से स्ट्रिंग के एक एंड के ऊपर कोई भी एक मैस अटैच कर दिया है, कोई भी एक मैस अटैच कर दिया. दिस मैस इज कॉल्ड एज द बॉब. रेडियस ऑफ दिस बॉब प्लस लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ पेंडुलम. सो सपोज दैट कि आप लोगों ने इस पेंडुलम को डिस्टर्ब करके इस पोजीशन पे ले आए हो, पोजीशन ए पे ले आए हो, और इसको यहाँ से रिलीज़ करिए तो ये स्विंग करता हुआ इधर आएगा. It will come to here, this position. Suppose this position is B, और यहाँ से स्विंग करता हुआ वापस पोजीशन A के ऊपर जाएगा. तो इसको जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा फ्रॉम पोजीशन A to B and then back to A, that time is called as the time period. So we have to derive the formula for the time period of simple pendulum. Okay, dimensional analysis का concept हम लोग use करेंगे. From the information given from the statement of assignment, we can write that time period it depends upon the first thing mass. Mass को मैं indicate कर देता हूँ small m के साथ. Secondly length of pendulum. Length of pendulum को मैंने small l के साथ indicate कर दिया है. And thirdly acceleration due to gravity, and acceleration due to gravity I have denoted it by symbol g. Okay. आप इनकी पावर्स ले सकते हो, माइनस ए ले सकते हो, प्लस ए ले सकते हो, माइनस बी प्लस बी, कुछ भी आप लोग ले सकते हो, लेकिन जो आपके पास फाइनल रिजल्ट बनेगा वो एग्जैक्टली सेम बनेगा जिस मेथड से भी आप लोग सॉल्व करो. सो सपोज दैट आई राइट द पावर्स ऑफ एम एज ए, पावर्स ऑफ एल एज बी एंड पावर ऑफ जी एज सी. सो now what I have to do before going to dimensional analysis, I have to remove this sign of proportionality by the sign of equality. So what I will do simply t sign of proportionality को मैं sign of equality के साथ remove कर देता हूँ.
जब आप इसको रिमूव करोगे, यू नो दैट हियर कम्स द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच इज़ इंडिकेटेड बाय सिंबल k, and the rest of equation will remain same, m power a, l power b, and acceleration due to gravity g power c. Now students, you know that dimensions of time, dimensions of time period t, it is just a time, so its dimensions will be m power 0, l power 0, t power 1. Okay. Secondly, dimensions of length, sorry, dimensions of mass. So dimensions of mass simply will be m power 1, l power 0, t power 0. Thirdly, dimensions of length, indicated by small l. These dimensions will simply m power 0, l power 1, t power 0. And finally, dimensions of acceleration due to gravity g, dimensions of acceleration due to gravity g, this is equal to m power 0, l power 1, t power minus 2. क्यों इसके ये डायमेंशन है? आपको पता है g की वैल्यू 9.8 है विद अ यूनिट मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. तो जब आप लोग इस यूनिट से डायमेंशन निकालोगे, यू विल गेट m पावर 0, l पावर 1, t पावर माइनस 2. सो नाउ यू हैव द डायमेंशंस. और व्हाट यू हैव टू डू, आप लोगों ने जो भी सारे के सारे डायमेंशंस हैं इनको वापस इस इक्वेशन में यूज़ कर देने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल t, dimensions of t I know, m0, l0, t power 1. So on the left hand side I will get m power 0, l power 0, and t power 1. Okay, this is equal to, I have constant of proportionality k which is dimension less constant, so उसके कोई dimensions नहीं होंगे. Then I have mass m, and the dimensions of mass m you have written over here, m power 1, l0, t power 0. So you will get m power 1, l power 0, t power 0, and this raised to the power a. Then length, so dimensions of length are m0, l power 1, t power 0, and its power is b. And finally, dimensions of acceleration due to gravity, that is m0, l power 1, t power minus 2 raised to power c. Now what we have to do, आप लोगों ने simply अंदर मल्टीप्लाई कर देना है पावर्स को. You will get m power 0, l power 0, t power 1. This is equal to m1 multiplied by a, simply you will get a 0 multiplied by a 0, 0 multiplied by a, simply t power 0, into m 0 multiplied by b, simply 0, 1 multiplied by b, b, 0 multiplied by b, 0, then again m0, l power c, t power minus 2 c. ओके, जस्ट जिनकी बेसिस सेम है उनकी पावर्स को एडअप कर देना है आपने. अगर आप देखो यहाँ पे m, सबसे पहले मैं m को देख लेता हूँ. m इसकी पावर है a, देन m power 0 plus 0, then m power 0 plus 0, multiply by length power 0, 0, length power b plus b, and length power c plus c. Finally, time power 0, 0 plus time power 0, 0 plus time power minus 2c. So you will get minus 2c. So just count here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, we are right. Now on the left hand side I get m0, l0, t power 1. All that we have to do is to compare the powers of m, compare the powers of l, compare the power of t. So first of all I will compare
compare powers of m. Powers of m. By comparing powers of m, you will get here m power 0, and here I have m power a plus 0 is obviously equal to a, so a. So finally you from there you get the value of a, which is equal to 0. So here you have the value of a equal to 0. Next I will compare the powers of L. So what you do, you will simply compare the powers of L. Okay, by comparing powers of L, you will get 0 plus b plus c is equal to 0. 0 plus b plus c is equal to 0, or simply b plus c is equal to 0. Okay, finally I will compare the powers of t. So compare powers of t. So by comparing the powers of t, I can see here 0 plus 0 minus 2c is equal to 1. 0 plus 0 minus 2c is equal to 1, or simply from here you get minus 2c is equal to 1, or simply you will get c is equal to minus 1 divided by 2. So आपको a की भी वैल्यू नोन है, c की भी वैल्यू नोन है. From these values you can find the value of b from this much equation. This equation says that b, this is equal to minus c, and c has a value minus 1 by 2, so you will get minus into minus 1 by 2. Minus into minus gives you plus, so you will get b is equal to simply 1 divided by 2. So now you know the values of a, values of b, and values of c. All that you have to do is to plug all these values in your equation number 1. So what I am going to do, I am going to put values of a, b and c in equation 1. Okay, my equation number 1 says that t, this is equal to some constant k. Okay, then m power a, and from here I know that value of a is equal to 0. So m power 0 into L power b, so L power b, and value of b I know that it is 1 by 2, so it is 1 by 2. Finally acceleration due to gravity g power c, and c I know that it is minus 1 by 2, so power minus 1 by 2. Now you know that from the algebra that anything raised to the power 0 is equal to 1, so m power 0 will be equal to 1, and you will get t is equals to k, some constant of proportionality, m power 0, this is equal to 1, L power 1 by 2, g power minus 1 by 2. You can write it as L power 1 by 2 as it is, और g को मैं डिनोमिनेटर में लिख दूँ तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, so I can write g 1 by 2, or more simplifying this much I will get t is equals to k इंटू 1 मल्टीप्लाई हो गए, आंसर सेम रहेगा इसलिए 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है. 1 by 2 एक्चुअली अंडर रूट के इक्वल होता है, सो आई कैन सिंपली राइट इट एज अंडर रूट L by g. So this is your formula that you have derived by the help of the dimensional analysis. Now again यहाँ पे constant of proportionality k आ रहा है. As I have told you in the previous lecture that we cannot find this value of k, the value of k by the help of dimensional analysis. What I have to do, I have to do extensive experiments, and by experiments I can find the value of b. Experiments show that by experiments k has a value equals to 2 pi. So you can simply write it as t is equal to 2 pi
under the root L divided by G. So this is your equation for the time period of the simple pendulum. And how you have derived it? You have derived it by simply by the help of the dimensional analysis. Okay. These are your example number 1.7 and assignment number 1.7. All this much was related to second application of dimensional analysis, that is deriving the possible formula. Now I am giving you some home assignment and you have to solve that assignment, and that assignment is basically related to the deriving possible formula for the dimensional analysis. So here I have home assignment for you, that is your homework. What you have to do, you have to derive the formula for the centripetal force. You have to derive formula for centripetal force denoted by Fc. Formula for centripetal force. The information that I am going to give you is that the centripetal force, it depends upon three things. First, the velocity. It depends upon the velocity of moving body in a circle. Secondly, it depends upon the radius of circle. And finally, it depends upon the mass of body. From this much information, you have to derive the formula for the centripetal force by the help of the dimensional analysis. And the formula that you get at end will be equal to Fc is equal to mv square divided by r. This is a famous formula that you have studied in your metric class. So अगर आप लोग यहाँ तक इस फार्मूला को easily derive कर लेते हो, it means that you have understood this much application. If you face any difficulty while deriving this formula, you can ask me the questions, you can contact with me. Inshallah students, in the next lecture we will discuss the MCQs of your chapter. Till यहाँ तक हम लोगों ने चैप्टर के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे हम लोगों ने कवर कर लिए हैं. प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने मेजॉरिटी डिस्कस कर लिया. आई थिंक 1 और 2 प्रॉब्लम्स आर लेफ्ट जो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. और यहाँ पे ये हमारा चैप्टर कंक्लूड हो जाता है. इस चैप्टर में कोई टॉपिक, कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ आई, यू कैन कॉन्टैक्ट विद योर कंसर्न टीचर्स और यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी. इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू. So inshallah in the next lecture we will discuss about the MCQs and the problems that we haven't discussed since so far. Till that, Allah Hafiz, thank you very much.